Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here is Sadia Naseem, your botany teacher from Behriya Foundation College, Nowshera of Rose. Students, today we are present here again with another topic of the same chapter. Our chapter was chapter number 5, the cell cycle. Today I will discuss about two ways of cell death. जैसे कि सेल खुद ब खुद ही डिवाइड होते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम भी रखा है कि सेल्स की डेथ भी खुद ब खुद होती चली जाती है. देयर आर टू वेज ऑफ सेल डेथ इन द लिविंग थिंग्स. वन इज़ द एपोटोसिस एंड सेकेंड इज़ द नेक्रोसिस. सो वी विल डिस्कस ईच स्टेप वन बाय वन. Cell in an organism depends upon various extracellular signals. It is regulated and controlled activities. It means all the activities, even the death of cell is programmed. So, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इवन कि सेल की जो डेथ है वो भी क्या होती है, प्री प्रोग्राम्ड होती है, अचानक से नहीं होती. हमें पता होता है कि एक सेल की लाइफ इतनी है, इतने अरसे के बाद इसकी डेथ हो जाएगी. इज द सेल डेथ बेनिफिशियल और नॉट? लेट्स सी. Cell death in proper control of multicellular development is very important, which may lead to the deletion of entire structure. For example, trail of the developing human embryo or some part of organ which is more required, like tissue between the developing digits. कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि कुछ फ्रॉग होता है, फ्रॉग का जो लार्वा है, लार्वा की टेल होती है, फ्रॉग का लार्वा हैज़ ए टेल. लेकिन जैसे जैसे फ्रॉग एडल्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेल, उसके लार्वा की सेल जो टेल होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है. तो इन केसेस में सेल डेथ बेनिफिशियल है, एनिमल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है. एपोटोसिस ऑफ सेल डेथ, इट इज़ द नेचुरल वे ऑफ सेल डेथ. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑटोफेजी. ऑटोफेजी मतलब डाइजेस्ट इटसेल्फ, सेल डाइजेस्ट इटसेल्फ. ऑटोफेजी इट्स ऑल्सो कॉल्ड द सेल्फ डिस्ट्रक्शन. अनदर नेम ऑफ एपोटोसिस इज द सेल्फ डिस्ट्रक्शन. ओके, ऑटोफेजी और सेल डिस्ट्रक्शन. सो it is a programmed change which lead to the sequence of physiological change in the cell, which cells commit suicide collectively called the apoptosis. ओके, एक फिजियोलॉजिकल चेंज आता है बॉडी के अंदर जिसमें सेल क्या होता है, दे कमिट सुसाइड. एक्चुअली इट इज कॉल्ड द एपोटोसिस. नाउ नेक्रोसिस, दिस टाइप ऑफ सेल डेथ विच इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर लाइक द इन्फेक्शन. कोई इन्फेक्शन हो जाती है बॉडी में जिसकी वजह से सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है. कोई टॉक्सिन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है जो सेल की डेथ कॉज कर सकता है. और कोई ट्यूमर हो सकता है जो सेल की डेथ कॉज सकता है. तो नेक्रोसिस इज आ एक्सीडेंटल सेल डेथ. ओके, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल डेथ, नेक्रोसिस एंड second is the apoptosis. Okay, read this topic very carefully and memo the definition of apoptosis and necrosis. You will write down the definition of apoptosis and necrosis on your copy and send me your homework. I will wait for your homework. Allah Hafiz.